मैं अभी खेड़गांव में और कैमरा बोपे गांव में। मैं अभी बोपे गांव में है और सुनील खेड़गांव में, तो लोखंडे बीच में है। ना घर का ना घाट का। माझे मामा काय म्हणायचे, तुला मार पाहिजे का सुख पाहिजे? सगळे साप हिंडायचे, सगळे साप मळ्यामध्ये पायाखाली. Like in Mumbai, sun rises at east in the morning at Khedgaon also. Birds started chirping at the same way, and flowers started showing their glory. I raised early to take a morning stroll across the field with Lokhande. Maharashtra ranks 1 in grape farming in India. Varieties seen here are Anab-e-Shahi, Thompson Seedless, Chima Sahebi, Pandari Sahebi, Gulabi, Bokhri, Kali Sahebi, etc. Some fields are getting ready for next cultivation after last harvesting. In some fields, grapevines have already fruited. Dipping, a process to increase the yield, is going on. We will witness this soon in the next episode. Before I took a close look at grape vineyards around, something in Lokhande's field captured my attention. When learned in detail, it became an ideal example of strong communal harmony in this scenic Indian village. यहाँ पर जो था एक बड़ा आम का पेड़ था। पेड़ के छांव में एक मिस्त्री ने बच्चों को सुलाया था। बच्चे ने उधर पेशाब कर दिया। उसके बाद वो एकदम बीमार हो गया। डॉक्टर की दवा से भी ठीक नहीं हो रहा था। वो मिल पर जो अन्ना था उसने बताया कि ऐसा ऐसा है कि कहाँ सोया था। फिर वो बताया वहाँ पे, तो उसने बताया कि इधर कुछ बनाओ। तो वो जो ताबीज़ है उन्होंने बनाया था। ये ताबीज़ बनाने के बाद में मैं जॉब में लग गया। उसके बाद मैंने उसके ऊपर छप्पर डाला था, पत्रे लगाए थे खाली, शेड। बाद में ये सब राजू ने बनाया। However, I was not that convinced and heard some laughing after listening to his story. वो मम्मी बराबर होता ही। तो इसका जब से मन्नत शुरू कर दिया है, उसके बाद में ये सब ठीक चल रहा है। The village house has become very alive. Mercury was its lowest in the morning. My fans gathered around me and the fire for some warmth. But I was looking for the old lady to get the story right. एवढं सापडला अगं. अरे ही जमीन आहे ना. This land was of Baba Gonderao. This was of Muslims. आणि मग Our ancestors bought this land. आमच्या आजा पंजाने घेतली जमीन.
This land was so full of sugar canes that the bullocks used to just eat them. This land was so wealthy, but then suddenly was affected by drought, and everyone became poor and had to beg for their living. My uncle once got wild and suggested to stop eating crabs and liquor. There was a huge mango tree opposite to my in-laws' place, and near to the mango tree was a small temple. My uncle said, "There is some God power that I feel in this place." I did not believe, but he said, "In the evening I will get few people and you get few, and let's dig up this place and see." When in the evening we dig the place, there was lot of treasure and a huge cobra passed by. But no one understood. Just people used to pray and leave. आणि मग दुसऱ्या जाऊन त्याला दाखवलं, त्याने तेच सांगितलं, माझे मामा जागती जोत होते. मामा इथं आले Next, माझे नाशिक my mama said, "If you pray this, you will be happy and prosperous." काही नाटक होईल. But I did not believe. But my father believed and put up a diya. Put up a diya, prayed, and started fasting every Thursday. We felt there was difference in our lives since then. Then I sowed a packet of jawar, and from that I was able to harvest 12 sacks of jawar. मामा काय म्हणताय, बाई तू देवाला काय देशील? म्हटले काय देऊ तुम्ही सांगाल ते. My mama said, "What will you give me to eat?" I said, "Whatever you want, I will give you." He said, "You put this to good use." लहान होता, मुंबईहून आला. Then my Bhausar came and said, "If there is real God, then may I wish to get a good work? I will take care of you." झाकण घालून बने मी काय दुसरा होता तो गेला तो याच्या पाठला. मग त्यांनी ना दोघं भावांनी Then he covered the area with asbestos. झाकण केल्यावर मग एक माणसाने Once a traveler by sat under the mango tree and ate peanuts and also drank liquor, and then he slept under the mango tree. The next day his whole body was swollen. Then someone asked, "Did you visit this village that has a mango tree, and did you drink and sleep there?" He said, "Yes." असं सांगितलं. I never believed in all these things. म्हाताऱ्याचा माझ्या गैबिशा म्हणून खूप जास्तीच होते 3-4 पिढ्यापासून. तर मग There was also a Madrasi Anna next to us. त्यांनी मळा गेले ते याचे तिथे पाया पडायचे, नमाज पाडायचे. He said, "You believe this and it will give you prosperity." हे लोक पत नाही धरायचे ना. त्याच्यामुळे ते आणि मग मी तिला Then I put a diya and dhoop and started praying that place since then. बाग बगीचे सगळं चांगलं झालं, कुठं वाईटच नाही झालं. मी मानायला लागले, बाकी नाही. My house is always full with everything. बाकी नाही काही. Everything good happened. After this, I believed in the God. People say that God and what religion, but I believe. There is lots of treasure under that mango tree. My mama said, "You want treasure or happiness?" I said, "What is the use of treasure? It is all the happiness that I want." And lots of snake used to go around. But since I started praying, there has been no snake. बडा सरकार छोटा सरकार गुजरातला जायचा. मग इथून त्याने विचारलं कसं काय आहे ठाण म्हणून, नाही तर मग फेकून देऊ आपण काढून. Everything is about belief. If we believe it, then it is there. Else it is of no use. We move to the grape vineyards which have started fruiting.
काम के लिए लोग दूसरा गाँव से आते हैं। ये इधर कोकण है ना, जंगल आदिवासी लोग हैं, इधर से मंगा लेते हैं, उनको पैसा देते हैं पहले एडवांस में। हम लोग अभी वो भोपे गांव और खेड़ गांव का बीच में ये बॉर्डर लाइन है, ये जो दिखता है ये बॉर्डर है। वेस बोलते हैं इसको हाँ। गाँव की। क्या बोलता है? वेस 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 बोलता है। वेस बोले तो बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन। तो मैं अभी खेड़ गांव में है और कैमरा बोपे गाँव में। भोपे गांव में है। अभी ऐसा जाएगा तो अभी मैं अभी भोपे गांव में है और सुनील खेड़ गांव में, तो लोखंडे बीच में है, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। ना घर का ना घाट का। We continued our journey along the no man's land between Khodgaon and Bhopegao, aiming the grape farm of twin brothers. One of them is a postgraduate in polymer chemistry. मैं जॉब करता था, पर क्या कोरोना की वजह से मुझे जॉब से निकाला गया। ट्विन से हम दोनों ट्विन से। समझा, इसलिए तो चेयर ये खेती में ज्यादा काम कर रहा है, इसलिए तो थोड़ा सा हाँ, आपके यूट्यूब चैनल है क्या? हाँ है, ज्योतिष बाबू नेचर का लेता। ये अंगूर का ले, जूम करके ले। करा कॅमेरे तोंड करा, टीव्हीवर जायचंय आपल्याला. तुमच्या याच्यात मोजणी करायची बरं का? त्यांनी का मागं शूटिंग काढली पाहिजे ना ती.